अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज बहुत ही यमी सी रेसिपी और सिंपल सी रेसिपी है दाल की, जिसमें हमने जी तड़का लगाना है बहुत ही स्पाइसी सा और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। दाल मैंने वॉश करके सोक करके इसमें रख दी है और इसके अंदर कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं। हाफ कप ऑयल मैं यूज़ करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ अबाउट 1.5 कप ऑफ दिस दाल रेड लेंटल्स, जिसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट विच यू कैन यूज़ एज पर योर टेस्ट, half teaspoon chili, red chili, half teaspoon turmeric, and about 1 teaspoon cumin seeds. Along with that, we're gonna have 1 chopped tomato, 3 to 4 cloves of garlic, fresh garlic, and I've used 1 green chili. That is it. इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे। मसाले सब चीज़ें इसमें डाल दी हमने। This is by far the most easiest recipe and it tastes yum. It may not sound spicy here, but जो तड़का लगेगा उसमें हम चिली फ्लेक्स यूज करेंगे, so it will eventually make it really spicy. थोड़ा सा इसको आप रोस्ट करो। Let's make the temperature high. थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे, ऑब्वियसली साथ हिलाते रहेंगे। इसके अंदर कोई पानी हमने नहीं ऐड किया अभी तक, लेकिन टमाटर डाले हुए हैं। Alright, so for about 4 to 5 minutes इसको हमने रोस्ट किया है और जितना आपने पानी ऐड करना है आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 से 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ और इसको अब पकने के लिए छोड़ देंगे। It will take about 30 to 35 minutes I guess, not more than that. बस that's it. इसको अब कवर करके एक दफ़ा बॉयल आने दें और जैसे बॉयल आ जाएगा इसको मैं मीडियम टेम्परेचर पे करके पकने दूंगी about 30 minutes. That's it. और उसके बाद हम तड़का रेडी करेंगे। Alright friends, so दाल रेडी हो चुकी है, बस इसमें अब तड़का लगेगा and it's all ready to be served. So we're using about 1/4 cup oil, 1/4 cup oil. Okay, so oil गर्म हो गया, इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ about 1 tablespoon of cumin seeds. And we're gonna add about 1/4 spoon of chili flakes. Along with that, I'm gonna add 1 green chili. And now the temperature goes a bit low, ताकि जो ग्रीन चिली है वो बर्न ना हो, जीरा भी बर्न ना हो। जैसे ही ग्रीन चिली हो जाएगी, इसके अंदर हम ऐड करेंगे coriander and it will be ready to go into the oven. It's gonna be cooked by then, and this tadka really makes a difference. There's me and my husband who like spicy food, and by adding all these spices, it makes it really delicious. I'm going to make it a bit high. Okay. Oil garam tha isliye zyada time nahi laga. Coriander. Here comes tadka. That is it. It's like a game of 40 minutes to cook dal. अगर इससे भी कोई काम नहीं करना, you can use a pressure, but it doesn't bother me even if I'm not using pressure. Give it a good mix. And a little bit spicy, but yummy. Dal is ready. Let's serve this.